बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ओ अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद स्किल्स। लर्न इंग्लिश सीरीज़ की क्लास नंबर 4 के साथ हाजिर हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन्स एंड टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ नाउन्स नंबर 3 यानी कॉन्क्रीट नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्क्रीट नाउन्स रेफर टू व्हाट पीपल कैन एक्सपीरियंस थ्रू देयर 5 सेंसेस: साइट, हियरिंग, टच, स्मेल, टेस्ट। कॉन्क्रीट नाउन को उर्दू में इसमें जामिद कहते हैं। कॉन्क्रीट नाउन्स यानी इसमें जामिद वो इस्म होते हैं जिन्हें हम अपने 5 सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं या चख सकते हैं। 5 सेंसेस के बारे में तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो चले बताए देते हैं। Our 5 sensory organs. We have all heard about the 5 senses: see, hear, smell, taste and touch. To see, we use our eyes. To hear, we use our ears. To smell, we use our nose. To taste, we use our tongue. And we touch with the help of our hands. So basically, human beings have 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. आप सबने 5 हवास के बारे में सुना है। अगर नहीं सुना तो हम बताए देते हैं, यानी देखना, सुनना, सूंघना, जायका चखना और छूना। देखने के लिए हम अपनी आँखें इस्तेमाल करते हैं, सुनने के लिए हम अपने कान इस्तेमाल करते हैं, सूंघने के लिए अपनी नाक इस्तेमाल करते हैं, चखने के लिए हम अपनी ज़बान इस्तेमाल करते हैं और हम अपने हाथों से छूते हैं। तो बुनियादी तौर पर इंसान के 5 हिस्सी आज़ा होते हैं: आँख, कान, नाक, ज़ुबान और जिल्द। A concrete noun is a noun that refers to a physical thing, person or place, something or someone that can be perceived with the 5 senses: touch, hearing, sight, smell and taste. Most nouns are concrete nouns. For example, rocks, butterflies, grandmothers and the Great Minar-e-Pakistan. Even invisible things including air which can be felt and music which can be heard are concrete nouns. हमारे इर्द गिर्द ज़्यादातर चीज़ें concrete nouns हैं। मिसाल के तौर पर पत्थर, तितलियाँ, दादी, मीनारे पाकिस्तान, यहाँ तक कि पोशीदा चीज़ें बशमूल हवा जिसे महसूस किया जा सकता है और मौसीकी जिसे सुना जा सकता है, इसमें जामिद यानी कॉन्क्रीट नाउन्स। Some more examples: sandpaper, book, thunder, bell, cake, perfume, syrup, flower, music, beer, apple, tornado, boat, colony, milk, Niagara Falls, team, lotion, stars, water, student, firefighter, pencil, computer, table, tree, fox, bang, cloud, panther, sunset, cinnamon, rain, cookies, car, etc. Here we have listed concrete nouns under various categories such as people, place, animals, objects, etc. People: scientist, dentist, doctor, firefighter, teacher, man, businessman, Rita, etc. Animals: bear, deer, fish, dog, cat, gorilla, cow, buffalo, puppy, lion, tiger, etc.
places: Pakistan, Delhi, island, Lucknow, school, park, market, mountain, Turkey, etc. Objects: biscuit, pancake, pencil, fruit, lock, keys, eraser, coffee cup, mobile, pizza, table, chair, etc. दिए गए सेंटेंसेस में रेड कलर से लिखे गए वर्ड्स कॉन्क्रीट नाउन्स हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन्स इन सेंटेंसेस. Number 1. I picked an apple from the tree in my backyard. Number 2. I sat down on the comfortable chair and opened my book. Number 3. My dog barked excitedly when I came home from work. Number 4. The cat curled up in my lap while I watched TV. Number 5. I parked my car in the garage and went inside. Number 6. The leaves on the tree rustled in the wind. Number 7. My brother moved into a new house last month. Number 8. I opened the door and greeted my guest with a smile. Number 9. The sun shone through the window and warmed the room. Number 10. I found the key to my apartment in my pocket. Number 11. I signed the document with a blue pen. Number 12. My son played the drums. Some more examples. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉन्क्रीट नाउन्स की मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स दी जा रही हैं ताकि आप कॉन्क्रीट नाउन्स को बहुत अच्छे से समझ सकें और असाइनमेंट को सॉल्व कर सकें. Assignment for class number 4. Remember, concrete nouns can be detected and felt with our 5 senses. याद रखें, कॉन्क्रीट नाउन्स का हमारे 5 हिस्सी आज़ा यानी सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए पता लगाया जा सकता है या इन्हें महसूस किया जा सकता है. Question is, circle the concrete nouns in each sentence below. दिए गए हर सेंटेंस में कुछ कॉन्क्रीट नाउन्स मौजूद हैं. आप उन्हें तलाश करके उनके गिर्द दायरा लगाइए. Number 1. I bought a new dress for Eid. Number 2. I sat on the porch with my dad. Number 3. We took a tour of the castle. Number 4. I saw a bear in the woods. Number 5. The dolphins swam in the ocean. Number 6. I wore a beautiful dress to the dance. Number 7. We had to wear a uniform to school. Number 8. My shoes were untied. Number 9. I put on a new pair of socks. Number 10. My house is made of brick and mortar. Number 11. A cat ran across the garden and climbed the fence. Number 12. I can see a lot of bookcases in the library. उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी. असाइनमेंट सबमिशन के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं. So don't forget to like, subscribe and share our channel Education with Skills. Stay happy, stay blessed.